कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए स्ट्रिक्ट यानी जिसके पास रेंट अ कार रेंट अ बाइक हो, दे शुड फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स। जो कोई वायलेशन करता है उनकी लाइसेंस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी। प्राइवेट कार प्राइवेट बाइक देने वाले या ड्यूअल नंबर्स रहने वाले उनके लाइसेंस डायरेक्टली विच विल बी द परमानेंटली कैंसल्स की जाएंगी। होटल्स एंड अदर रिलेटेड्स बाकी सारे पहने जो वहाँ पे उनके विद इन द कैंपस ढेर सारे इंसिडेंट कभी कभी होते हैं, बिकॉज देयर इज एन लेबर पुलिस वेरिफिकेशन इज एन कंपल्सरी फॉर देम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने सारे लेबर्स बाहर के स्टेट से आते हैं और विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू दिस टाइप ऑफ मिसचिफ एंड ये यहाँ से भाग जाते हैं। इसके लिए उनके ऊपर विजिल रखने के लिए देयर शुड बी द कंपल्सरी police verification before employing the any employers in the tourism related activity. Even though अपने lifeguard they are 100% 24/7 जहाँ पे है, मैं टूरिस्ट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ whenever there is a lifeguard is requesting not to go for the swimming, they should avoid the swimming into the danger zone. जहाँ पे हमने बहुत जगह पे देखा है, जब हमारे गोवा is only the state which having the lifeguard on the beaches. No other state having any lifeguard on the beaches. We are continuously monitoring through our lifeguard, through the Drishti is our agency at present. और वो बार बार टूरिस्ट को और बाकी लोगों को रोकते भी हैं, लेकिन कभी कभी टूरिस्ट यानी उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके कभी कभी पानी में जाते हैं। इसलिए यानी मेरी टूरिस्ट को भी रिक्वेस्ट है कि स्टेट के रूल फॉलो करें। स्टेट में अच्छी तरह से यानी टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी अच्छी तरह से बिहेव करना जरूरी है। लीकर ट्रेड लाइसेंस टाइमिंग के बाहर जो लीकर सेल करता है, जिसके पास जितने बजे तक की टाइमिंग है तब तक ही वो लीकर सेल करे। मोस्ट ऑफ द टाइम 11 बजे के टाइमिंग के बाद यानी उनके पास विदाउट हैविंग द प्रॉपर लाइसेंस दे आर सेलिंग द लीकर्स एंड द गवर्नमेंट विल द एक्साइज डिपार्टमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन देम सो दैट इन फ्यूचर 2 बार के बाद उनके लाइसेंसेस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए आज के मीटिंग में TTAG, GCCI, CI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, शेक ओनर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, एयर अथॉरिटीज़, रेलवेज, ये सभी लोग आज के इसमें मौजूद थे। सभी ने सभी दृष्टि से सहकार्य करने का योग दिया है। आज की मीटिंग स्पेशली हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज की थी क्योंकि बाकी लोगों को यानी द क्रिसमस सीजन इज देयर, न्यू ईयर एंडिंग इज देयर। गोवा में जितने सारे रेस्टोरेंट और बाकी जो चल रहे हैं उनके पास लाइसेंसेस और फायर सेफ्टी और बाकी सभी सेफ्टी रहे वही चलते रहेंगे। जिनके पास नहीं है वो बंद कर देंगे। मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। द टूरिज्म सीजन विल कंटिन्यू। तो गोवा में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। डेफिनेटली फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी is our priority. On that we are working on the priority basis. कॅसिनोच्या बाबतीत 100% सेफ्टी आणि सिक्युरिटी त्यांना घेवपाक लायल्या आणि ताच्याकडे परतूय आमचे फायर डिपार्टमेंट वचून इन्स्पेक्शन करतले। परतूय बी ऑलरेडी त्यांच्याकडे फायर लायसन्सीस आसा। ते कन्सर्न फायर डिपार्टमेंटाचे काम आसा, फायर डिपार्टमेंट पळयता। आत्ताचो एक्झॅक्टली ह्या केसीच्या संदर्भातले हांव पर्टिक्युलरली एखाद्या केस ही आत्ता घेवन बसूना। माय इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑथॉरिटी इज डुईंग द इन्व्हेस्टिगेशन ऑन दॅट। त्या खातीर तो एक गजाल हांव नक्की सांगू शकता की ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स नाशिल्ले, ताका ट्रेड लायसन्स जे दिल्ले त्या ट्रेड लायसन्साचेरूच बाकीच्यो ज्यो आसा पळय न्ही सगळी लायसन्सां दिल्ली आसा। आतापर्यंत 6 जाणांक अरेस्ट केल्या, 3 जाणां ऑफिसरांक सस्पेंड केल्या, 2 जाणांनी येवन आपलो स्टेटमेंट काल दिला, त्यांची इन्क्वायरी सुरू झाल्या। एकटा अजून येवंक ना, तो जर येवंक ना आसत जाल्यार ताका पुलीस अरेस्ट करतले। टाइम टू टाइम गव्हर्नमेंट प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्यो प्रिकॉशन्स जी आसा पळय 100% घेत आसता। इट इज एन पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, पुलीस करीत आसा।
पोलीस स्टेशन असले त्यांना त्याच्याकडे डॉक्युमेंट्स मागलेले पण त्यांना एक गव्हर्नमेंटातलो एक IPS टॉप ऑफिसर त्याने FIR की त्याच्या घालपाची न्ही म्हणून त्याचे प्रेशरायज केलं म्हणून अशा पद्धतीचो इन्सिडन्स आतापर्यंत तरी माझ्या नजरेक येवंक ना. Tourism activity and code of conduct is these are the two different things. Tourism activity code of conduct लागना. सर एक इन्फॉर्मेशन आनी जो रशियन वहाँ पे डांस कर रही थी वो टूरिज्म वीजा पे थी ना कि बिजनेस वीजा पे, तो बिजनेस परफॉर्म कर रही थी विदाउट प्रॉपर वीजा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? म्हाका दिसता आमी आज जे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला ऑनरेबल सीएमान इज पोस्ट अ रिव्यू विथ द होल थिंग जे मुख्यमंत्र्यान मांडिल्लें आसा. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना एक म्हणल्यार ऑलरेडी इन्क्वायरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान त्या इन्सिडंटाचेर मागिल्ली आसा विच इज अ अनफोर्सिन इन्सिडंट विच हॅपन अनफॉर्च्युनेट एंड दॅट डेफिनेटली इज अ फायर दॅट कॉज अफेक्टेड लायफ एंड कॉज डिस्ट्रेस. We need to ensure that as it was a tragic incident, our thoughts along with the government, Chief Minister is doing everything possible to help those families. At the same time to ensure we are looking at ensuring that whoever was affected, तांचे बरोबर करप. आज जी रिव्यू मागिल्ली आशिल्ली तातूंत दोन गजाल्यो आमकां फुडें समजून घेवपाक जाय. गोवा हॅज बीन अ टुरिजम डेस्टिनेशन. टुरिजम हॅज नेवर बीन अ स्ट्रेट लायन. And ताज्या खातीर we need to always talk about resilience, recovery, and reinvention. We have with us Brijesh Pandey, input editor, who in fact joins us on this particular conference that has been called by the Goa Chief Minister. Brijesh, suddenly the questions about whether licenses are there for these clubs, questions about fire safeties are there for these clubs. I mean, these are something that comes normal when you have the club to be functioning. So what was happening for such a long time when these licenses were not in fact given, and then suddenly it takes up an incident to wake up to find out how many of these clubs, these ad hoc clubs rather, are functioning without any of the required certificates? Well, Varghese, first thing first, I mean, if you look at the kind of revelation that has been coming about the way this club was being run by Luthra brothers, it looks like that, that there's nothing wrong. There was everything wrong that could go wrong as far as running of the club is concerned. The club was running on a disputed land, which was a government land. There was no proper fire safety audits, no fire safety clearances taken by the fire department. And it looks like that, the extraneous methods were used to make sure that the club was running, and club was running for this long. The Goa government, in this press conference, the Goa Chief Minister has made it very clear that now strict action will be taken, licenses will be cancelled if found in violation. He has also went on to talk about, how the motorcycles and cars which are given to tourists, if they are given without proper verification of their driving licenses, or if there's any accident, then the owner of license of the owner of those vehicles will be cancelled permanently. Talked about liquor sale outside the designated hours and said the strict action will be taken. But I think, it all points to one most important question, that how come, for this long, people were operating without, with absolute impunity, and, they had zero regard as far as functioning of the law is concerned. So it'll be very interesting to see whether the cracking of the whip also affects the government servants, because, without which it was almost impossible to run this kind of system, which had no clearance whatsoever. Names of an IPS officer is also doing the round, that they use their clout to make sure that the police did not raid this particular club. I think, the onus is also on the government to make sure that that individual should be named and also be arrested for being in cahoots with the illegal way this entire operation was being run. Varghese? Well, it took something like an incident in Birchwood to actually bring out all these factors. But interestingly enough, the Chief Minister was also saying that there should be verification given for those who are being employed from outside, because he said that whether it's the security, the bouncers, or other things, there seems to be fights that are taking place with the tourists, and most of the time it turns out to be bad. So a series of issues have just cropped up from this fire incident. It's not about just the licenses, whether how they got it, or how they managed it. It's a lot of things to do with the tourism, and especially with the running of these clubs that have come in. Now it looks like it's a comprehensive, probably a post-mortem policies that they are looking at. Anything and everything that could be wrong
was wrong in the way this club was running, and I think it raises a lot more questions than the government is ready to provide answers for. Government is absolutely right that if you are employing somebody from outside the state, you have to get it registered. That is absolutely all right. But I think the bigger question which the government needs to answer is that how was this illegal club was being run? How was there was no proper fire safety audit which was there? If you remember, when the fire broke out, the lane which led to this particular club, it was 600 meters, and the fire tenders were not able to enter. And if had there been a lot more space, a lot many lives could have easily been saved. So the fact of the matter is that that there are wrongs which have been committed at every single level. There were complaints about it, that how this particular operation was being run. There was no crackdown by the government. Now, name of an IAS, IPS is coming out. So I think if the government is serious about overhaul, there has to be going to be a systematic overhaul of the system. The license providing authorities have to be very, very strict, when it comes to giving licenses to these kind of establishment, making sure that antecedents of the owners and how serious they are a player, and especially in the place where they are being established, has to be minutely scrutinized before any kind of license given. Same goes with the fire safety department, because we have seen how it functions and the kind of casualty which comes given the fact that there have been absolute compromise as far as fire safety audits are there. So I think there are a lot of questions which the government do need to answer. All these crackdowns which Goa Chief Minister said is a welcome step, but I think the system needs a big overhaul for sure. Varghese? Also, when we are looking at the reactions coming in from the Chief Minister, of course, licensees, he's touched about the kind of action that they will be taking. But right now, it looks like most of the clubs are now scrambling to get their papers in order. Even those who have been running for quite some time will have to look into the gaps in their permissions or the kind of papers that they would. So it's going to create a mad rush for it, isn't it? Oh, it should be. It should be. Because, it is a question of whether human life is more important or commerce is more important. And if human life is more important, and if there is any scant regard as far as law of the land is concerned, then, there has to be proper procedure which has to be followed. There are established laws that, whenever you're opening establishment, you have to have a liquor license, you have to have a clearance license, you have to have a fire safety audit, which needs to be done. And if it is not done, then it should, the club owners should get a license and with a proper facility at their clubs. And if it is not done, the government must crack down, make sure that those establishments are shut till the time they are able to be a complete 100% compliant with the law of the land. And there can't be two ways about it. And I think that it's extremely unfortunate that the government has woken up after a loss of 25 individuals. But the fact of the matter is that better late than never. And there has to be even if it is a mad scramble, I think with the festive season around the corner, the government should make sure that there is no repeat of what happened on 7th of December. Varghese? You have in fact brought in the festive part of it with regard to it's going to be the season now in Goa because you have Christmas as well as New Year coming in. So a lot of tourists are in fact going to pour in. Interestingly enough, one question that has always been asked about Goa has been the unplanned nature of both the development, the commercially as well as when it comes to its normal development as well. It's been quite unplanned, and in the recent times also the mushrooming of concrete structures, semi-concrete structures, who was giving the permission for it? Suddenly they discovered that parts of the club were not in fact prescribing to the legal methods or rather the legal prescriptions that have been in fact given. They had to go for a demolition. So there are going to be people who have violated the basic construction laws also when it comes to this. Well, Varghese, I have a very clear stand as far as these issues are concerned. The fact of the matter is that if any unauthorized construction is being done, it is the duty of the government to ensure a crackdown to make sure that the law of the land is followed. If the law of the land is not followed, I think, a vast chunk of that responsibility lies at the door of the government. The government cannot shirk it away and say that, that they are not in a position to crack down. They are not in a position to, arrest these individuals. If there's an unplanned growth which is taking place inside the state, it is the job of the government to make sure that it is not unplanned. I mean, if there's a
security violation which is being done, if there's an illegal construction which is being done, then the government has to crack down. I'm not saying that the government would have the wherewithal of cracking down if there are 100 illegal arrangements in 100 clubs. But the fact of the matter is that if there's a serious crackdown and the messaging. We have, in fact, Pramod Sawant speaking again. Let's listen. Structure, and they'll give this, submit the report to the concerned authorities, and then they'll take the action. Second, ये जो हमने joint enforcement and monitoring committee बिठाई है, क्योंकि इस तरह के high footfall वाले जो रेस्टोरेंट्स ये रहते हैं, इनके लिए वहाँ जाके खुद मॉनिटर करना, और उनके लिए दिस इज जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी के लिए पूरा चार्ट दिया है. उन्होंने इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कहाँ पे क्या क्या सेफ्टी हैं, इस तरह के ऑल टुगेदर इट इज एन अप्रॉक्सीमेटली यानी 12 पॉइंट्स दिए हैं. इस 12 पॉइंट्स के अंतर्गत यानी जो फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया, उनके ही रेस्टोरेंट्स कंटिन्यू रहेंगे. समझो मेजर वायलेशंस कुछ हमें दिखा, जैसे आपने पूछा, क्योंकि मॉक ड्रिल ईच एंड एवरी जगह पे करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईच एंड एवरी जगह पे यानी फायर सेफ्टी रहना चाहिए. दिस जॉइंट एनफोर्समेंट कमिटी विल डेफिनेटली सी देयर शुड बी द फायर सेफ्टी इज देयर, एंड देन ओनली इट विल बी द कंटिन्यू. इसलिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, क्योंकि इतने सारे जो गोवा में बाकी रेस्टोरेंट रहेंगे वो 100% यानी फायर सेफ्टी होके ही रहेंगे, इतना मैं आश्वस्त करता हूँ. रोमियो लेन के कुछ प्रॉपर्टी तोड़ने के आदेश थे, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे, तो सरकार क्यों पीछे रही गई थी? सरकार ने जब हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे तो उसके आधी प्रॉपर्टी ऑलरेडी डेमोलिश की थी, बाकी कुछ था इट इज अंडर द, उसने जो कुछ एप्लीकेशन दिया था वो एक्सपेडाइट करना था, वो कल के दिन मैंने एक्सपेडाइट करके बाकी भी उसकी डेमोलिश कर डाली. सर, इस केस में मेन एक्यूज सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा. लास्ट टाइम जो ट्रेड जोन किए थे थाईलैंड फुकेट में, सर अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि ब्लू कलर नोटिस आप लोग जारी करने में कामयाब रहे, आपकी गवर्नमेंट नोडल एजेंसी सीबीआई के टच में, क्या स्टेटस अभी कहाँ है? कितना समय और लगेगा इनको वापस आने में या फिर अरेस्ट करने में? मैं आपको इतना कह सकता हूँ, बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. My police department is in touch with the government of India, with the rest all other agencies. Definitely within the short span of a time, they'll come under behind the bar. सर, ये जो सॉल्ट पैन लैंड पर जो क्लब ऑपरेट हो रहा था, वो सॉल्ट पैन लैंड पर बना था, और 4 नवंबर को कुछ एक्टिविस्ट ने एक पंजी बेस्ड लॉयर के थ्रू लीगल नोटिस भी सेंड की थी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी सेंड की गई थी, और सारे डिपार्टमेंट्स को एड्रेस की गई थी कि यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी वायलेशंस है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनके पास परमिट्स नहीं है, इस पे एक्शन लिया जाए. बट उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, और फिर डेफिनेटली इसके मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कौन से भी गवर्नमेंट ऑफिस में अभी कंप्लेन देने के बाद देयर इज एन प्रोसीजर टू डू दैट, वो ड्यू प्रोसीजर्स चल रहे थे, और मीनवाइल ये एक्सीडेंट हुआ. और एक्शन होना है जैसे कहा है, इसके जिस तरह से रोमियो लेन में एक्शन हुआ, क्या कहा, और अन्य जो लूथरा ब्रदर्स के यहाँ पे ये है प्रॉपर्टी, उस पे एक्शन होना है? मैं स्पेसिफिकली ये कहूँगा, जो इलीगल एक्टिविटीज या इलीगल कंस्ट्रक्शन में जो चल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन होगी. For broader inquiry, are you contemplating to have a judicial inquiry instead of magistrate inquiry? At present जी इन्क्वायरी चालू असा पळय, ताजो पहिले रिपोर्ट येवनी, ताज्या उपरांत विल डिसाइड. मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरीचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत ताज्या भितर जर आमकां दिसलें की आनीकूय ऑफिसरांक कोणाक सस्पेंड करपाक जाय किंवा तेजेर इन्क्वायरी सबमीट करपाक जाय आसा, डेफिनेटली विल कन्सिडर दॅट ऑल्सो. दोन फावटी डेमोलिशन फाटल्या फावटी केले, आता वायलेशन आसा, सो हेजेर कितें परमनंट सोल्युशन? आयक सांगता तुका, जितके वायलेशन जाल्ले आसा पळय न्ही, तितके डेमोलिश करून उडयतले, आनी ह्यान फुडें अशा पद्दतीचे वायलेशन तांकां करपाक मेळचे ना. दॅट्स ऑल. थँक्यू. ते रोमियो लेनाचे 24 ऑलरेडी डेमोलिश केल्ले, 25 केन्ना तरी तांणी परत हे जेन्ना केला तेन्ना पावसान आमी उडोवपाचे आशिल्ले. पावसान दर्याच्या टायडा खातीर मशीन कुडंट गो देर. ताजे मागीर सीएमान पर इन्स्ट्रक्शन दिना फुडें आमी कोडा मागीर जे करूंक सोदताले, सीएमाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे कलेक्टिवली ऑल डिपार्टमेंट्स हॅव गॉन, आनी जितले ते एन्क्रोचमेंट आशिल्ले ते सगळे काल उडयला. इन्सिडेंट जाता न्ही, तुमी नोट केलो, कित्याक ह्या टायमार तुमकां हे इश्यू दिश्टी पडलो म्हणून. जेन्ना आमी करता 2 म्हयने जस्ट मदीं आमी ते कालांगूच 3 स्ट्रक्चर उडयले. एनफोर्समेंट इज कंटिन्युअस एंड एनफोर्समेंट विल बी डन. थँक्यू. थँक्यू.
Well, Vijay, interestingly, the last part of it where the tourism minister is saying enforcement is continuous and enforcement will be continuously done. But of course, no answers when it comes to how long will they take to apprehend the Luthra brothers there. How do you in fact see this aspect of it? Too late for the keeping the enforcement going? Well, I think, there are procedures which follows, because the CBI is the Interpol arm as far as India is concerned, and any Interpol request has to be raised through CBI. So the government is also in touch with the Thailand authorities, and the government is also raised an Interpol request. A blue notice has been issued by the CBI, and I think going by what the government sources are saying, that they would be in a position to nab the absconding Luthra brothers pretty quickly, because if you look at the sequence of events, the escape of Luthra brothers was something which nobody would have thought, because this incident happened at around 1 o'clock. The news of the calamity came at around like 2:33 that 25 people have lost their lives, and I think at around same time at 3:34 Luthra brothers were there at the international airport to catch their flight to Thailand. So it was very clear that that there was an immediate decision which was taken by Luthra brothers. The second the news of 25 casualties came in, and they fled the country. And since there was no, they were not wanted in any legal cases in India, there was no way the Indian immigration could have stopped them. It was only later when the Goa police reached their Delhi residence, they came to know that they have already fled the country. So it was not much the agencies could have done at that point of time. But yes, ever since the fact that they have absconded has come to notice, the government is in touch with Thai authorities. They have raised a blue level request by the CBI, which is Interpol arm of India, and I think if we go by what the government sources are saying, very soon they will be in a position to apprehend and bring back Luthra brothers. Varghese? Well, thank you, Brijesh, for in fact joining us with all those details. Let us in fact listen to the Chief Minister of Goa once again on the subjects he's touched upon, especially with regard to the tragedy that happened in one of the clubs there. ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और बाकी भी लोग जो हैं इनको डेफिनेटली 100% हम अरेस्ट करेंगे। इसके बाद में गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट होने के बाद इस तरह के एक्सीडेंट आगे न हो, इसलिए आज की मीटिंग विद ऑल द डिपार्टमेंट्स और स्टेक होल्डर्स इनके साथ में हमने ली है। मैं टूरिज्म मिनिस्टर और सीएस इन सभी ने यानी उनके सभी जो इश्यूज थे वो भी सुन के ले लिए हैं और हमने उनको एडवाइज भी किया है एंड फॉलो द एडवाइजरी आल्सो एंड फॉलो द जॉइंट इन्फोर्समेंट कमेटी का रिपोर्ट फॉलो करो। इस तरह के एक्सीडेंट और कभी और कहीं पे भी न हो, इसलिए जो एरियाज हमें कंसर्न थे, फॉर एग्जांपल द ड्राउनिंग ऑफ द टूरिस्ट, जहाँ पे रिस्क रहती है वहाँ सभी जगह पे एंड ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेफ्टी प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने के लिए कहा है। स्पेशली इन द वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्सीडेंट्स इस तरह के न हो, इसलिए जितने सारे लाइसेंसेस और सेफ्टी उनको फॉलो कर, जेट स्कीज, बनाना राइड, पैरास्लेडिंग, टूरिज्म बोट्स या ईच एंड एवरीथिंग्स। जिस जगह पे फायर सेफ्टी फेलियर्स इन द टूरिज्म एस्टैब्लिशमेंट है, हमें ब्लंटली वायलेशन कहाँ पे भी दिखा, समझो हमारी जो जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी ने इंस्पेक्शन करने के बाद ब्लंट वायलेशन दिखा तो कुछ दिन के लिए उनकी एक्टिविटी जब तक नॉर्म्स फॉलो न करें तब तक वो बंद रहेंगे। ओके। सेकंड, इवन दो देयर इज एन असॉल्ट फाइट्स बिटवीन द टूरिस्ट एंड द एस्टैब्लिशमेंट, इनके बीच में भी न हो, इसलिए जहाँ पे वो टाउट्स हो, बाउंसर हो, इस तरह के जो कोई हैं, द गवर्नमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। इसलिए हमने चाहे वो टीटीएजी, सीसीए, सभी जितने सारे टूरिज्म स्टेक होल्डर, शेक ओनर्स एसोसिएशन, होटलर्स, इनको सबके लिए हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, आप कानून हाथ में न लो, आपको जो कुछ है यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ आवर पुलिस सो दैट वी कैन टेक द प्रॉपर एक्शंस अगेंस्ट देम। रोड एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग द टूरिस्ट, ढेर सारे टूरिस्ट जो रेंट कार, रेंट बाइक, ये लेके ढेर सारे एक्सीडेंट्स जो गोवा में होते हैं, मेनली द पेडेस्ट्रियन, कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए स्ट्रिक्ट यानी जिसके पास रेंट कार, रेंट बाइक हो, दे शुड फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स। जो कोई वायलेशन करता है उनकी लाइसेंस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी। प्राइवेट कार, प्राइवेट बाइक देने वाले या ड्यूअल नंबर्स रहने वाले, उनके लाइसेंस डायरेक्टली विच विल बी द परमानेंटली कैंसल्स की जाएंगी।
hotels and other relateds, बाकी सारे पहने जो वहाँ पे उनके विद इन द कैंपस ढेर सारे इंसिडेंट कभी कभी होते हैं, बिकॉज देयर इज एन लेबर पुलिस वेरिफिकेशन इज एन कंपल्सरी फॉर देम. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने सारे लेबर्स बाहर के स्टेट से आते हैं और विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू दिस टाइप ऑफ मिसचिफ एंड ये यहाँ से भाग जाते हैं. इसके लिए उनके ऊपर विजिल रखने के लिए देयर शुड बी द कंपल्सरी police verification before employing the any employers in the tourism related activity. Even though अपने lifeguard they are 100% 24/7 जहाँ पे हैं, मैं टूरिस्ट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ whenever there is a lifeguard is requesting not to go for the swimming, they should avoid the swimming into the danger zone. जहाँ पे हमने बहुत जगह पे देखा है, जब हमारे गोवा is only the state which having the lifeguard on the beaches. No other state having any lifeguard on the beaches. We are continuously monitoring through our lifeguard, through the Drishti is our agency at present. और वो बार बार टूरिस्ट को और बाकी लोगों को रोकते भी हैं, लेकिन कभी कभी टूरिस्ट यानी उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके कभी कभी पानी में जाते हैं. इसलिए यानी मेरी टूरिस्ट को भी रिक्वेस्ट है कि स्टेट के रूल फॉलो करें. स्टेट में अच्छी तरह से यानी टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी अच्छी तरह से बिहेव करना जरूरी है. लीकर ट्रेड लाइसेंस टाइमिंग के बाहर जो लीकर सेल करता है, जिसके पास जितने बजे तक की टाइमिंग है तब तक ही वो लीकर सेल करे. मोस्ट ऑफ द टाइम 11 बजे के टाइमिंग के बाद यानी उनके पास विदाउट हैविंग द प्रॉपर लाइसेंस दे आर सेलिंग द लीकर्स एंड द गवर्नमेंट विल द एक्साइज डिपार्टमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन देम so that in future 2 बार के बाद उनके लाइसेंसेस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे. इसीलिए आज के मीटिंग में TTAG, GCCI, CI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, शेक ओनर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, एयर अथॉरिटीज, रेलवेज, ये सभी लोग आज के इसमें मौजूद थे. सभी ने सभी दृष्टि से सहकार्य करने का योग दिया है. आज की मीटिंग स्पेशली हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज की थी क्योंकि बाकी लोगों को द क्रिसमस सीजन इज देयर, न्यू ईयर एंडिंग इज देयर. गोवा में जितने सारे रेस्टोरेंट और बाकी जो चल रहे हैं उनके पास लाइसेंसेस और फायर सेफ्टी और बाकी सभी सेफ्टी रहे वही चलते रहेंगे. जिनके पास नहीं है वो बंद कर देंगे. मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है. द टूरिज्म सीजन विल कंटिन्यू. तो गोवा में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ. डेफिनेटली फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अवर प्रायोरिटी. ऑन दैट वी आर वर्किंग ऑन द प्रायोरिटी बेसिस. Meanwhile, in a major development in the Goa nightclub fire tragedy, Ajay Gupta, one of the owners of the club where 25 people lost their lives, have been arrested by Goa police in Delhi. Ajay Gupta is the brother of Amit Gupta, as well known North Delhi builder. Amit Gupta was murdered by the Gogi gang in Burari 2 years ago. Ajay Gupta is one of the 4 owners of the Birch by Romeo Lane. Earlier,